वेलकम बैक। अब हम एपीएस की बात करते हुए ज़्यादा उदास इसलिए भी नहीं होना चाहते कि वो लोग जो कि इस वाक़े से मुतासिर हुए, जिनकी जानें गईं या जो ज़िंदा रहे, और वो जो बिलवास्ता मुतासिर हुए, यानी कि उन बच्चों के वालिदैन जिनके साथ ये सब कुछ हुआ, वो ज़िंदगी की तरफ लौटे हैं। क्या खूबसूरती से लौटे, उनकी वो कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन अल्लाह ने जो उनको सब्र और हिम्मत अता किया है वो बेमिसाल है। लेकिन इस सिफाकियत की जिसकी हम बात कर रहे हैं, बेरहमी की, इंसानी बेहुरमती की, यकीन जानिए मुझे नहीं लगता कि इससे पहले तारीख़ में कोई मिसाल होगी और इसके बाद कोई तारीख़ में मिसाल मिलेगी। आज से 8 साल कबल ये फूलों का शहर था, जहाँ पे नन्ही कलियों को खिलने से पहले मसल दिया गया। आपको याद है वो स्कूल जहाँ तालीम को परवान चढ़ना था, वहाँ खून की नदियाँ बहीं। 132 तलबा समेत 149 अफराद को एक ही जगह पर इस दिलखराश वाक़े में शहीद कर दिया गया। इससे पूरी कौम को मुत्तहिद किया। इस सहने का हर शहीद यकीनी तौर पे नाज़रीन पाकिस्तान का गाजी भी है, हमारा फ़ख्र भी है। और इन्हीं हम अगर जैसे कि हमने कहा ना कि ज़िंदगी लौट आई है, तो हम सिर्फ उम्मीद की बात करते हैं। अर्मिला, एक नौजवान है अहमद नवाज, आपको पता है, पहले भी हमारे साथ आ चुके हैं। इन्होंने एपीएस थाने में अपना एक भाई खोया, मगर जो कर्ब था ना, इसको उन्होंने गले नहीं लगने दिया, बल्कि इसको शिकस्त दी और तालीम से शिकस्त दी। और बिल्कुल जिस तालीम को जिसको दहशत गर्दों ने रोकने की कोशिश की, इस तालीम को इन्होंने हथियार बनाया और दुनिया को साबित करके दिखाया कि हिम्मत, बहादुरी और अज़्म की दास्तान है ये। और अहमद नवाज आजकल ऑक्सफोर्ड में तालीम हासिल कर रहे हैं और बेनज़ीर भुट्टो के बाद पहले पाकिस्तानी हैं जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन के सदर बने हैं। सफ़र के बारे में भी अहमद नवाज से जानेंगे, इनके फ्यूचर प्लान्स को भी डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि ये पाकिस्तान के लिए क्या करने का इरादा रखते हैं। इस वक्त ऑल द वे फ्रॉम बर्मिंघम हमारे साथ उनसे हम बात करते हैं। अहमद नवाज, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें ज्वाइन किया। अहमद, इस साने को बात करें तो इतना अरसा गुजर गया, 8 बरस बीत चुके हैं, हम नहीं भूले। ऑब्वियसली आपके लिए भी ये भूलना आसान नहीं होगा। जो लम्हात आपके गुजरे, कुछ हमारे साथ शेयर करें। It's been 8 years since the Peshawar, the Army Public School attack, जिसमें मैंने अपना भाई खोया। कई सारे मेरे दोस्त इस हादसे में शहीद हुए। मैं खुद भी उस हादसे में ज़ख्मी हुआ था। इसके अलावा जो वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चे खोए, for everyone this day is unforgettable. मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए, जितने मेरे दोस्त थे जो ज़ख्मी हुए उस हादसे में, उन सब के लिए जो है तो ये दिन इट्स एन अनफुल डे। 16 दिसंबर का जो दिन था, हर साल जब ये वक्त ये दिन आता है 16 दिसंबर का, तो वो गम ताज़ा हो जाते हैं। The memories of all my friends, my brother, my teachers who lost their lives in that attack comes back to us, and it's a very painful memory because it was a very dark time in Pakistan that this incident happened, that children were brutally massacred in a school. उस हादसे से आगे आकर अभी 8 साल गुजर चुके हैं। हर साल जब ये दिन आता है तो मैं खुद से एक सवाल पूछता हूँ कि what have I done over the last year or many years since the attack to make sure that इस तरह के हादसात मुस्तकबिल में कहीं भी ना हो, किसी बच्चे पर भी इस तरह का जुल्म ना हो। तो over the last few years, every year this day comes. This day is that of prayers. दुआएं होती है, condolences for the parents, for other parents who have lost their children, but more importantly a day of reflection, a day of reflection to reflect on what we have done so far to make sure that these sort of things never happen again. The day of accountability, to hold the governments and the leadership to account, to see what they have done to make sure that these sort of things never happen. अल्लाह के शुक्र से इस तरह का हादसा उसके बाद फिर कहीं हुआ नहीं, लेकिन दहशतगर्दी जो है, बहुत सारे जितने different मसाइल हैं that leads to the suffering of young people, those sort of things should be reflected on and made sure that we try to get rid of those injustices, we try to get rid of those sufferings for young people and for people around the country. तो ये हादसे का जो दिन है, it's more than just a day of remembrance. It's a day of reflection, it's a day of accountability, and it's a day of looking at ourselves and asking the question, what have I done so far to help make Pakistan a more peaceful place? And what can I do to do further? और बसीयत कौम, हम तो आज तक इस शौक़ से नहीं निकल पाए, लेकिन मैंने शुरू में भी कहा कि मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ उन लोगों की जो कि इस जज्बे के साथ आगे बढ़े। आपसे मेरा अगला सवाल ये होगा,
कि उन अचीवमेंट्स के बारे में, चूँकि आप रुके नहीं, आप चलते रहे और आप तालीम से दुश्मन रोकना चाहता था, बट आपने अपने अज़्म से बताया कि मैं तालीम हासिल करूंगा, और आप जैसी और भी मिसालें हैं। मैं चाहूँगा आप ज़रा अपनी अचीवमेंट्स हमारे सामने रखिए इस सफ़र के दौरान, बिकॉज इट्स सच अ टफ जर्नी। So after the Army Public School incident, when I was brought to the UK for treatment, मैंने अपनी तालीम यहाँ पे शुरू की इलाज के साथ I got very fortunate that I got a scholarship into one of the best schools in the country. उसके बाद I continued to work hard alongside my campaigning to work on anti-radicalization to help the underprivileged children around the world and in the deprived parts of Pakistan. तो उसके साथ मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, and I worked hard to make myself into an example for young people in Pakistan as well, that despite of all the impediments, the difficulties that come our way, we are a resilient young people, and that we will show these terrorists in the world कि इस तरह के जो attacks हैं, so they can't put us away from our goals. So I continued my education at King Edward School, and यहाँ से जो है तो then I got accepted into Oxford University, with the alumni of which are some of the most known figures in the world in the history. So this was one of the bigger achievements. और ये जो है तो दहशतगर्दों जिन्होंने हम पर हमला किया, this was a slap in their face, showing that young people that you were targeting, that you thought that you had killed them, that you thought that you had killed their ambitions, their goals. Those young people are now at some of the finest universities in the world, and some of the finest institutions, and doing some of the biggest change-making things around the world. So that was my personal journey. I really sort of enjoyed working hard, being resilient towards these goals. कोशिश की मैंने अपनी हर कदम पे के to show the rest of the world that पाकिस्तानी कौम बहुत एक resilient कौम है, जो इस हादसात के बावजूद, despite all of these incidents happening, despite a lot of difficulties through our lifetimes, we are still an ambitious and resilient people, and we will continue to reach the highest of heights in the future, regardless of whatever our circumstances may be. आप अच्छी बातें कर रहे हैं, आपको सुन के इतना अच्छा लग रहा है, और वाकई जिस तरह से आपने कहा कि आप लोगों ने साबित किया है कि जो दहशतगर्द आप जैसे बच्चों को मारने के लिए आए थे, उन्हें पता होना चाहिए कि अब आप लोग पाकिस्तान को किस तरह से आगे लेके चल रहे हैं। डेफिनेटली बड़ी अच्छी बात है। अब आपकी इस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जर्नी के हवाले से हम बात कर रहे थे। आप बेनज़ीर भुट्टो के बाद दूसरे पाकिस्तानी हैं जो इस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की यूनियन के प्रेसिडेंट बने हैं। ये जर्नी आपका कैसा जा रहा है? जी बिल्कुल, I was the second Pakistani ever to become president after Benazir Bhutto. Benazir Bhutto was the first president of the Oxford Union, and I had the honor of becoming the second Pakistani president of the Oxford Union. It was an immense honor for myself and for my country and for my family and for everyone that have put faith in me. It gives a really strong message. Okay, over the last many decades, पहले जो है तो एक बेनज़ीर भुट्टो थी जिसने who was of course an inspiring lady who came to Oxford and who did this. Following those footsteps are not very easy. और APS के हादसे से आगे आकर doing something like that and aspiring to do something like that even in itself is a very bold step. लेकिन I was driven throughout my whole journey. When I got into Oxford, I was thinking कि यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ इस तरह की जिसमें पाकिस्तान की जो reputation है, पाकिस्तान का जो नाम है, तो I can put that on the global platform and raise a lot of these problems that young people in Pakistan are facing. So I went on to run for the president of the Oxford Union, and like Karam said, it was a landslide victory, and I went on to invite some of our Pakistani leaders, a lot of global leaders from different parts of the world, heads of states, Nobel Prize laureates, or just this image of a Pakistani president of one of the most prestigious institutions in the world, in itself was a message once again to those terrorists who attacked us, जिन्होंने हम पर हमला किया था, people who always thought that the Pakistani जो कौम है, they're not a resilient कौम. This is a message to them
that despite all the difficulties that I had to face since RB Public School attack, losing my brother, मेरे जो दोस्त थे, मैं खुद भी ज़ख्मी हुआ था, despite that, that I had the ambition and I aspired to get to this position. तो at the Oxford Union हमने जो है तो कई सारे global leaders को invite किया. Imran Khan, our former Prime Minister, joined us at the Oxford Union. इसके अलावा जो है तो we did the Benazir Bhutto lecture for the first time in a while, which was attended by the President of Georgia. इसके अलावा we invited a lot of other young leaders from around the world. Malala आई, there were other heads of states, etc. etc. So this institution and this platform was a huge milestone for myself, but also for all Pakistani youth. I think इससे अगर एक चीज़ जो है तो Pakistani youth ने लेनी है, it's that one could achieve any goals if you are ambitious, if you aspire high enough, and also if you're resilient through your journey. If I, who came from such a difficult time, from a very disadvantaged sort of position, could do it, everyone can. So that was a message that I wanted to convey through becoming the Oxford Union president and making this platform, showing it that it's a more, that it's an accessible platform for Pakistanis and that they should be able to aspire to such things. जहाँ पे एक जानिब इतने मुश्किल वक्त को देखने के बाद आपके लहजे में इतना क्या कहना चाहिए, उम्मीद है, इतनी आस है, पॉजिटिविटी है, ठहराव है, वहीं पे बहुत सारे पाकिस्तानी नौजवान इस वक्त जो पाकिस्तान में रहते हैं, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे अहमद, वो ये चाहते हैं कि हम मुल्क को छोड़ जाएं, वो बाहर जाना चाहते हैं. एक सर्वे कहता है कि बड़ी तादाद में नौजवान मुल्क छोड़ना चाहते हैं. आपके ख्याल में इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है और व्हाट डू यू थिंक, व्हाट काइंड ऑफ रोल स्टेट को क्या रोल प्ले करना चाहिए इस सूरत हाल में? So the youth situation in Pakistan, which I mentioned earlier as well slightly, is that I saw statistics about young people wanting to leave Pakistan, go to abroad to other countries. There's this big issue of brain drain. There were about 700,000 people who left or wanted to leave Pakistan. And that should be very concerning to the government. Yes, the government should be taking action right away. The government should be making sure that they provide opportunities to these young people. They incentivize these young people to stay in the country so that, because these young peoples are the most valuable assets that Pakistan has, that any country has in fact in the world. Our agar Pakistan, hamari leadership, agar is पे भी, if they don't take steps on this now, if they don't provide opportunities, if they don't incentivize these young people to stay, Pakistan will regret this for the next many decades. Because if these young people leave the country, these educated young people and talented young people leave the country's future will seem bleak. So that is a huge responsibility on the government to make sure that the young people are provided with opportunities, they're encouraged, and the government focuses a lot. It should be finally time that the government focuses on young people. Yes. And that is how I think Pakistan will go forward. And to the young people, regardless of wherever you are, I think the one thing that should remain constant should be our love for Pakistan, our love for making this country a better place for other people that live in our beautiful country. And I think that should be something that should remain in the back of your head always throughout your life. And should be an aim ultimately for everyone. की जिम्मेदारी है कि वो यंग लोगों के ऊपर फोकस करे, तभी इस मुल्क का जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा. और अहमद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और जो आपके ख्यालात हैं, जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, और जिस तरह से आप उनको लेके चल रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ बनाकर, ये ज़रूर हम कहेंगे कि काबिल तहसीन है ये बात. और थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड फॉर इंस्पायरिंग सो मेनी. यस, फॉर इंस्पायरिंग सो मेनी. अहमद नवाज हमारे साथ मौजूद थे, APS के स्टूडेंट थे और अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं और वहाँ की यूनियन के प्रेसिडेंट भी हैं. और बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बाद ये दूसरे पाकिस्तानी हैं. इनसे हम बात कर रहे थे. अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे.